welcome to your favorite show, Planet Bollywood. This is me, Gunjan Saini. And it's me, Sagarika Chetri. आज शो पे होंगी बहुत सारी बातें from the latest happenings from the world of Bollywood, glamour and fashion. लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले let's have a quick look at the headlines. सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक लैंडमार्क जजमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर लगाए 20 लाख का फाइन फॉर बैनिंग अ फिल्म. Student of the Year 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज. स्टार टुडे पे डीकोड करेंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलेब्स के स्टार स्टेटमेंट को. सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक लैंडमार्क जजमेंट और एक एग्जाम्पल सेट करते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर लगाया है 20 लाख का फाइन फॉर बैनिंग अ फिल्म. लेट्स हैव अ लुक. Expressing concern over growing intolerance in the country towards dissent views and putting curbs on artistic freedom, the Supreme Court on Thursday said that state is constitutionally bound to protect people's freedom and slapped a fine of rupees 20 lakhs on West Bengal government for blocking release of satirical film Bobishyotar Bhoot. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, The Constitution does not permit those in authority who disagree to crush the freedom of others to believe, think and express. The ability to communicate ideas is a legitimate area of human endeavor and is not controlled by the acceptability of the audience to those whom they are addressed. When the ability to portray art in any form is subject to extra-constitutional authority, there is a grave danger that fundamental human freedoms will be imperiled by a cloud of opacity and arbitrary state behavior. Definitely a landmark judgment because यहाँ पर one of the 6 fundamental rights was in question, freedom of speech and expression, for the reason कि ये जो movie already cinema halls में थी, एक दिन release के बाद, which was February 15th, उसके बाद it suddenly disappeared from the movie theaters. The movie makers had to go to the Supreme Court and file a complaint saying कि किस तरह से because of the government agencies the movie was taken off, and now they want to hear what the court has to say. And it is beautiful how the Supreme Court has come out and supported the fact that the artists have all the rights. They have the artistic freedom कि वो government agencies को criticize और critique कर सकते हैं, and we can't snatch away that freedom from that. Absolutely. Let's tell you exactly हुआ क्या था. ये फिल्म रिलीज हो चुकी थी, CBFC अप्रूव थी, सर्टिफिकेशन हो चुका था, and everything was clear. The film released और रिलीज के एक दिन बाद पुलिस ने सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीपल स्क्रीन से इस फिल्म को हटा दिया, कहते हुए ऊपर से आए हैं ऑर्डर्स की इस फिल्म को बैन किया गया है और ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है. यू कैन नॉट जस्ट कम टू द सिंगल स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन एंड से टेक दिस फिल्म डाउन. हु गिव्स यू द राइट फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड सेकेंडली, आफ्टर दिस थिंग वाज डन, ऑब्वियसली पीपल कुड नॉट डू एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन मार्चेस हुए, प्रोसेशंस हुए और उन्होंने सवाल उठाए कि क्यों हमारी फिल्म को निकाला गया है थिएटर से. टॉप बंगाली एक्टर्स ने इस पर आवाज उठाई, कहा दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अगेंस्ट द लॉ. एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क डिसीजन लिया है. इट सेट्स अ प्रेसिडेंट, इट सेट्स एन एग्जांपल कि आप जो कोई भी हो, you cannot come forward and challenge the certification which was given. CBFC एक body है जिन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया था, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते और मन मर्जी नहीं कर सकते. Absolutely, and this is not the first time, सागरिका, अगर हम देखें कि इस तरह से किसी भी मूवी के ऊपर या उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल उठे हैं, and the court has been moved for that. In fact, हमने पद्मावत के टाइम पर देखा था. In fact, 2011 में प्रकाश झा की आरक्षण के टाइम पर भी ये सवाल उठे थे कि किस तरह से कौन सा कंटेंट लोगों को देखने को मिलना चाहिए और क्या नहीं. और जब ये सवाल उठे थे तो आई रिमेंबर लास्ट ईयर आल्सो सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे जो चीफ जस्टिस बैठे थे, उन्होंने यही कहा था दैट सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी रियली स्लो व्हेन दे पुट सच और टेक सच रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स. एंड इन फैक्ट दे एक्चुअली टुक ऑफ द बैन फ्रॉम द गुजरात एंड राजस्थान, क्योंकि उस टाइम पे दे सेड दैट आर्टिस्ट हैव टू बी गिवन द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. एंड क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये एब्सोल्यूट नहीं है. यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन जरूर है इन माइंड कि आप किसी तरह से किसी को इवोक नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह से पीस खराब नहीं कर रहे हैं एक स्टेट का. बट ऑफ कोर्स इफ समबडी इज आर्टिस्टिकली एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड इवन इफ इट्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, आई थिंक इस तरह से हम लोग को एक बैक स्टेप लेना, एक टॉलरेंस यहाँ पर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है. एंड दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज अगेन एंड अगेन एंड स्पेशली थ्रू दिस लैंडमार्क स्टेप इज इंसिस्टिंग ऑन दैट द स्टेट नीड्स टू हैव लॉट मोर टॉलरेंस एंड वी एज आर्टिस्ट हैव टू बी एबल टू एक्सरसाइज आवर राइट व्हिच इज द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और गुंजन, पता है इस
पूरे मामले में सबसे डेंजरस बात ये थी कि कोई पार्टी ने ये पिटिशन नहीं फाइल की थी, कोई ग्रुप नहीं था जो जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे यहाँ पर रिलीजियसली या पॉलिटिकली। यहाँ पर एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल बॉडी, पुलिस, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ये इम्पोज किया था कि इस फिल्म को बैन किया जाए। तो ये बहुत डेंजरस था और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस पूरे जजमेंट पर दे केम डाउन हेवीली ऑन देम, ओनली दे कुड हैव डन दैट, ओनली दे हैव द पावर टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड दे डिड। Yeah, and that is why that heavier fine was important. 20 लाख का जो फाइन लगा है वो ना ही सिर्फ इकोनॉमिकली इज गोइंग टू सेट बैक द गवर्नमेंट बट आल्सो इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर देम। एंड ये सब जबकि यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द सिनेमा, वी हैव सीबीएफसी, उसके बावजूद भी द क्वेश्चन हियर अराइजेस दैट व्हाई डिड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फेल सो इनसिक्योर कि एक रेगुलेटरी बॉडी होने के बाद भी इट हैड टू टेक सच एक्सट्रीम स्टेप्स। एब्सोल्युटली। और हमारा सबसे बड़ा सवाल है चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि जब प्रेस ने उनसे पूछा व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस entire thing that's going on, she said that don't ask me this question, I will not answer it. And why will she not answer it? We really want to know now. There is a Supreme Court who has passed this landmark judgment, और इस judgment के बाद उनका क्या कहना है, we would really like to know, because she is answerable over here। क्योंकि अब बात है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, जिनको 20 lakhs का फाइन देना है to the film producer for all the losses। Also 1 लाख का फाइन भी उन्हें देना पड़ेगा, because the Supreme Court says freedom of speech cannot be gagged for the fear of mob, and it also expresses concern over growing intolerance in society when it comes to artistic freedom। Absolutely, Sagar, ये बहुत ही important एक और topic है, the fact that why can't we talk about what is politically happening in the country। भले वो हम लोग सिनेमा के थ्रू करें, भले वो हम लोग सोशल मीडिया पे करें, I mean a healthy discussion is so important, and just because somebody kind of varies from your thought process, why is it that we become so intolerant? We also have seen America, of course they are not in the best in the hands, लेकिन वहाँ पर भी लोग अपने डिस्कशंस करते हैं, लोग बहुत देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोग स्ट्रांगली करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, एंड देयर इज नो वे द गवर्नमेंट कम्स इन एंड टेल समबडी टू शट अप। बट व्हाई इज द करंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन आवर कंट्री stopping us? Why is the government coming here and infringing that healthy discussion that's happening here, that healthy artistic expression that we want to do in this country? And I think that is a question we should take back and ask ourselves कि ये intolerance इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? और ये एक मुंह तोड़ जवाब है उन सभी के लिए जो हर दूसरी फिल्म में एक पिटीशन फाइल कर देते हैं बैन के लिए, क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो या पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि देयर इज अ बॉडी, सीबीएफसी बोर्ड है फॉर सर्टिफिकेशन फॉर अप्रूविंग कि ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं, और उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। Another most awaited film of 2019, Student of the Year 2 का ट्रेलर आ चुका है सामने। Well, of course, there was a lot of buzz around Student of the Year 2 because Coffee with Karan में आए थे, and you know they were really promoting and everyone was waiting. But I must say, the trailer looks good, but I'm a little disappointed only because it looks very similar to the first movie, Student of the Year. Now, I can see the same flips, I can see the same competition happening. Of course, Student of the Year, of course, it will talk about the campus, it will talk about your school, and you know उस अंदर क्या होता है. But मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ना स्टोरी में कुछ अलग होगा, थोड़ा सा कुछ हो भी सकता है. It's just the trailer, but trailer से जितना समझ में आ रहा है, I must say I am a little disappointed. Not only you, in fact, some of the people who have commented on the trailer are also saying something similar. They're saying same story, same competition, same love triangle, same friendship, same story with zero logic. Absolutely disappointed. I think Student of the Year was better, but I also feel कि in retrospect Student of the Year was better क्योंकि eventually it gave us 3 superstars. अगर हम if we look back and we see were they at their best, they weren't. But of course seeing कि यहाँ पर 3 new talent debut कर रहे थे, उस हिसाब से it of course became bigger than what it was because it gave us Alia, Siddharth and Varun, and we don't know what kind of Bollywood big stars are now in the making through this. And Tara and Ananya are both debuting with this movie, and I have to say Tara Sutaria is anyway somebody जो Bollywood के circle से बाहर से आई हैं. She has been an extremely talented girl जिसको especially उनके talent के basis पर लिया है. Absolutely. But here after seeing the trailer I had to say that I didn't see the magic of Tara Sutaria, and I want to go easy on her because it's her first big movie. It's a Dharma movie. Yeah. I mean cameras, sets, everything could be overwhelming for you, and I think वो overwhelmingness दिखा on the part of Tara, but in the same place. But at the same place, मुझे Ananya Pandey, I think she had that spark
which I wasn't kind of expecting. Were you also kind No, of I surprised? wasn't. I'm quite surprised. I'm very impressed with थोड़ा सा जो भी उनका glimpses हमें दिखाई दिया है ट्रेलर में, उसमें मुझे तो impressive लगा है because Ananya, because when I see her do interviews and the person I see on screen in that trailer are two completely different individuals. Maybe also because her character demanded that sort of authoritativeness or that sassiness that came out. Absolutely. लेकिन अगर टाइगर श्रॉफ की बात करें, टाइगर श्रॉफ is already established. He has had a big hit with Baghi and Baghi 2. तो हमें पता है टाइगर की capabilities क्या है. We know what a great guy in martial arts and haven't you seen action. the same tiger everywhere? Absolutely. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने थोड़ा सा जो ये यहाँ पर एक्शन दिखाया है, थोड़ा सा हीरोपंथी, थोड़ा सा बागी 2 से लिया गया है. और आई एम अमेज्ड कि स्टूडेंट also is so well built with 8-pack abs in place. Of course अगर ऐसा स्टूडेंट हो तो इंस्पिरेशनल है, लेकिन टाइगर को मुझे लगा थोड़ा सा मेलो डाउन करेंगे इस फिल्म में ताकि वो स्टूडेंट की तरह उस किरदार में वो फिट हो. वैसे in their defense, I would say that even Varun and Siddharth had the abs and they were showing a lot of their body through Student of the Year 1. But I feel कि अब Student of the Year 2 had to bring in something more than the great bodies and the hair poker straight in place and these glam dolls that we see. I mean, of course, ultimately we are showing a school life, and school life, like they say, is lot more things, like lot more push and pull than just being love stories being unraveled. And I feel वो जो disconnect, and especially when we are seeing such great cinema getting made, even in a smaller budget, that big disconnect is going to be a point जो audiences भी कहेंगे कि what else? Like, of course, we've seen the great sets, of course, we've seen amazing, dolls and hair in place, and we've seen the action sequences which are too good to be true. But then what more? Also, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेलर बहुत ही आपको डिसअपॉइंट कर देता है, बट फिल्म जबरदस्त होती है. एंड समटाइम्स ट्रेलर बहुत बढ़िया होता है एंड फिल्म समवेयर लेट्स यू डाउन. सो इट्स टू अर्ली टू जज राइट नाउ. ट्रेलर ही आया है. शायद अगर आप जाकर फिल्म देखोगे तो शायद स्टोरी प्लॉट में कुछ अलग हो, कुछ ट्विस्ट हो, विच वी कांट डिसाइड राइट नाउ. अभी तो डिस्कशन हो रही है बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रेस थी. बट वील हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच फॉर द फिल्म टू रिलीज एंड गो चेक इट आउट फॉर आवरसेल्व्स. एक रीसेंट इंटरव्यू में सलमान खान का कैंडिड अंदाज आया नजर, और उन्होंने एक कैंडिड अंदाज में कहा कि आमिर खान और शाहरुख खान हैं उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स. सलमान खान ने आमिर और शाहरुख से ज्यादा सक्सेस मिलने के सवाल पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है. सलमान खान का कहना है, By the grace of God, the films that I'm choosing have done well, but it is not as if Amir or Shahrukh are choosing bad or worse films. There are times when the movies I've chosen, to the best of my knowledge, haven't worked, and then one film works and you're back. Shahrukh Khan is a legend, as is Amir. A bad movie here or there may happen, but they will always come back. Actually, tension to mera hai. Amir and Shahrukh Khan know their craft. I've heard people saying they're not so sure about me. यही नहीं, सलमान ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा है, My thing is that I'm surviving on mediocre talent and luck. Actually, I don't know what I'm surviving on, but I'm surviving. मेरे ups and downs तो होते रहेंगे. By the grace of God, हमारी fan following इतनी तगड़ी है. There's also Aki, Akshay Kumar, Hrithik Roshan and Ajay Devgan. वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि सलमान खान जितने ही बड़े दिल के हैं उतने ही ज्यादा हम्बल हैं, बिकॉज फॉर बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, फॉर बीइंग द सुपरस्टार दैट ही इज, उसके बाद भी ये कहना कि मैं सिर्फ मीडियोकर टैलेंट और लक की बदौलत चलता आया हूँ, दैट इज समबडी हु नोज दैट हाउ टफ दिस इंडस्ट्री कैन बी. एब्सोल्युटली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लाइक यू सेड, क्योंकि उन्होंने कहा है मेरा मीडियोकर है टैलेंट, मुझे पता नहीं कि मेरी फिल्म्स कैसे चलती है, मेरी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, लेकिन शाहरुख एंड आमिर डेफिनेटली know their craft, and it takes a big heart to say that after being in the industry for 25 long years and a mega star. Right, and I think that's what Bollywood industry does to you. आपको शीशा जरूर दिखा देता है, पर आपके ऊपर है how much of the truth you want to see. Having said that, he also pointed out कि कैसे his take on movies is still somewhere जो वो बदलना नहीं चाहते. He said कि मेरी movies को भले ही A certificate मिल जाए because of the action sequences, लेकिन nudity के लिए या फिर kissing scenes के लिए I would never do that, and that is my own little circle that I'm never going to cross. And मुझे इससे थोड़ी सी problem है, and वो problem ये है कि digital medium is one place which of course I would kind of agree, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने censorship का थोड़ा misuse किया है. There has been a plug-in for people to have a kissing scene, to have nude scenes.
but there are other people who very responsibly use this medium. I mean, we as a country, we really need to speak about sexuality. यहाँ पर rapes आए दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी खुलकर हमें sex के बारे में नहीं सिखाता. And I think also to understand that there is a fluid gender, also to understand that there are a lot of other same-sex relationships that are happening, and we want to broaden our horizons for that. बहुत ज़रूरी हो गया कि digital media में हम जिस तरह के shows देख रहे हैं, some of the shows that I have personally also liked and which have really changed the narrative जिस तरह से Bollywood में you know making out scenes दिखाए गए हैं. Like for example, if it's Made in Heaven, हमने पहली बार gay sex scenes देखे हैं यहाँ पर. We talk about 4 more shots please. We've seen 2 same-sex girls you know getting into a making out scene. Again, we've seen Sacred Games जहाँ पर transgender की sexuality के ऊपर खुलकर बात की गई है. Then there is self stimulation scenes जो वीरे वेडिंग हो या फिर लव स्टोरीज में जो फंसी थी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में ओनली बिकॉज एक होता है ओल्ड स्कूल थॉट्स जो होते हैं और एक इसलिए कहते हैं कि ओल्ड स्कूल और न्यू जनरेशन. बिकॉज ओल्ड स्कूल क्योंकि हमने पहले ऐसी मूवीज में कहीं नहीं देखा था. ये सब दबी दबाई बातें हैं अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपनी बिल्डिंग में, अपने एरिया में. नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, बट नाउ जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आए हैं, जब से वहां पर सेंसरशिप इश्यूज कम हो गई हैं, जहां सेक्शन 377 को हटाया गया, अब डिस्कशन शुरू हो चुकी है. एंड दैट इज व्हाई कंटेंट बहुत आगे बढ़ा है. एंड दैट्स व्हाई डिजिटल बूम हैज आल्सो हेल्प्ड दीज काइंड ऑफ कंटेंट्स टू बी अलाउड, जहां पीपल कैन गो व्यू एंड देन फील हाँ ये तो नॉर्मल है क्योंकि हमने ये उस पर्टिकुलर सीरियल या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री में देखा था. Absolutely, there's so many people who've had same-sex attraction going on, and they have felt themselves कि ये बहुत lost है. We have seen a lot of people who've now come out and said कि we felt we don't belong anywhere because Bollywood industry was only about a heterosexual couple. So we didn't see where did we fit in. And I think उस identity के लिए जो हम अपनी films बनाते हैं, एक artistic expression देते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that there are other mediums who can talk about such things also, so that somebody is sitting at their house and feeling lost can say कि यार ये मेरी story है, and in a more responsible way, definitely. But the fact is that these are the kind of new content we definitely want, and that is why I disagree with Salman Khan a little bit. But मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि सलमान खान ने जो कहा है वो अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए कहा है. Now of course he has his own choice. Now he says that he still feels uncomfortable watching such scenes with his family. Maybe that's how his upbringing was, क्योंकि पहले ये discussions तो हुआ ही नहीं करते थे. And now when he has his own production house, he has his own school of thoughts. शायद वो अपने production house के लिए no nudity या no kissing scene का term लगा सकते हैं because that is his choice, it's his production. But calling out on others जो ये करते हैं, to call them shocking, to call them not right, maybe somewhere थोड़ा harsh हो जाएगा because content बहुत आजकल आगे बढ़ चुका है. In fact, I know a lot of young mothers जो अगर अपने young बच्चों से sexuality के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, they have seen Made in Heaven with them. And I think shows like that have given them a way to connect with them कि कैसे आप responsibly you can start this conversation जो शायद हम अपने माँ बाप से कभी नहीं कर पाए. And the thing with sex is that somewhere we have to feel safe कि हमारे पास कोई है जिससे हम check back कर सकें, जिससे हम refer कर सकें, what is right, what's not right. And these are the shows जो वो conversation हमारी खुद की family के साथ या हमारे friend circle में वो conversation they are opening up, and I think we have to give them the credit for that. And talking about Salman Khan's statement, he says कि मेरी first film के बाद मैं बरजातिया family में include हो गया, and maybe he talks from his experiences because he has not kissed in his entire career in the film industry. He still is a mega star, तो इसलिए शायद वो अपने experience से कह रहे कि no kissing के बावजूद मैं एक मेगा स्टार बन सकता हूँ because बहुत सारा दूसरा कंटेंट भी है जो हम ऑडियंस को दिखा सकते हैं. नॉट नेसेसरीली हर फिल्म में या हर शॉर्ट फिल्म में किसिंग सीन होना जरूरी है. अगर स्क्रिप्ट डिमांड्स इट, डेफिनेटली इट शुड बी देयर, एंड मे बी दैट इज द स्कूल ऑफ थॉट ही कम्स फ्रॉम, एंड आई थिंक वी कैन गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट हियर. Tomorrow on the show, by invite only, कल आपको देखने को मिलेंगी नोरा फतेही जो बात करेंगे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग के बारे में, things that she has never said before. So don't forget to tune in at 7:30 PM. और अभी आपके लिए एक छोटा सा टीजर. Kill, marry, hook up. Vicky Kaushal, Angad Bedi, Siddharth Malhotra. I would hook up with Vicky and marry Siddharth Malhotra. Isn't he single? Why is the sexy success story single? I leveled up. I leveled up, girls. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार होगा स्टाइल टुडे सेगमेंट, सो स्टे ट्यून्ड विद अस.
Welcome back to Planet Bollywood. और अब वो वक्त आ चुका है when we decode the style statement of your favorite celebs, and with none other than Shikha Kohli, who's here with us today. We are starting with Sonam Kapoor, and yaar, her look of hers just and it is a moment where you have to like take a second, see her from top to bottom, and then be like, क्या outfit है? Right. So अभी इतना amazing outfit है तो breakdown भी कर दो. Right. So she was seen wearing a three-piece set. It was a printed set, and I have said this that prints are a really huge trend for spring summer 2019. And over here it was a monochrome set, so it was simple for the airport, but at the same time it was also very stylish and on trend. She was seen wearing a printed crop top with a skirt and a long line jacket, which was extremely structured. She styled the look with closed-toe black heels, and she wore black round Lennon style sunglasses. I think sunglasses are an accessory for actors for the airport at all times. So if you put it into perspective, it's such a simple look to put together because it's a three-piece set, it's the same print. You just throw it on and you're good to go. And at the same time, it's extremely stylish and comfortable as well. So I love this airport look of hers. Well, we also spotted Alia Bhatt. Now she was seen in this all pink, blush pink, if I'm not wrong, Yeah. outfit, beautiful flowy dress with a jacket. Please tell us more about it. So she was seen wearing a blush pink maxi dress from Pramod, which she styled with a blazer in the same color. She layered the look, so I think it kind of made it more formal, and I think it's a really cool way to style your maxi dress in a different way, where you just take it and then just pair it with the blazer. To make it even more structured, you could also in fact wear a belt over the blazer, so it really makes it look very refined. But over here she was going for a more easy vibe, so she just left it with the blazer, and she wore a pair of sneakers and carried a canvas tote and finished the look with sunglasses. My only complaint with the look is that it was too much blush pink happening. I love the maxi dress and the blazer and the tote and the shoes on its own, but together it was all in the same color family. It was almost the same color everything, so this monotone look was monotonous. But I kind of liked it, and I think Saga did too. I But did. but from a stylist point of view, True. probably it was still missing that thing. The other person is Ishan Khattar, and I have a feeling that you won't be able to take out anything wrong in this look because I love that shirt and that the fact he's paired it with white pants. What do you have to say? I love it too. I think it's such a brunch look for men. And not too often do we see men turn to pastel colors. Over here, he was seen wearing a pair of white pants that were athleisure style that had side stripe on them. And he paired it with a really nice pistachio mint green shirt, which had a super cool and young and fresh pineapple patch on it. And he styled it with a pair of brown Lennon style sunglasses. Another thing to note over here is the small styling elements that went into his look. One, he had cuffed his pants from the hem. If you're a shorter guy, just cuffing your pants from the hem will make you look instantly taller. Also, it looks cooler and it gives a breezier vibe. The second thing was that he wore a half tuck for his shirt. That is, he tucked it in from one side and left it out from the other side. Again, that makes it look more stylized. It looks really cool. So it was a simple look, but it was the tuck and the roll that really made it look really stylish, and it just put the entire outfit together. And of course, the sunglasses seamlessly completed the look. Now, another celebrity on our list today on Style Today is someone whose style you cannot follow, and if you can follow, not sure if you can carry it off well, is Ranveer Singh. Also, I think you can't ignore his style. for Absolutely. sure. So I think he's still in his streetwear element after Gully Yeah. Boy. He's still wearing streetwear. This was an endorsement event that he was at, where I think his inspiration this time was Super Mario, because the color palette and the True. outfit that he was wearing, he looked like Super Mario. He was seen wearing a pair of blue joggers that he paired with a blue and red colored oversized hoodie, and he wore a pair of sunglasses and he wore sneakers with the look, and it was very easy, simple. It was too caricaturish is what I feel. Right. I mean, he's done cooler streetwear looks in the past with his cool caps and, you know, the way he accessorizes it. And considering it was an endorsement event, I think he could have been a little bit more better styled. Well, thank you so much, Shikha. That was all from today's episode of Planet Bollywood. Time to say goodbye. Lekin jaane se pehle, we have to tell you what are we wearing. And I'm wearing a black floral dress with white details, and I've accessorized the whole look with white and black accessories. I've also finished it with black block heels. And I've chosen to wear a pink flowy maxi dress with a side slit, accessorized it with a golden choker and golden accessories and strappy pointed heels. And if you like our looks, go check it out on Myntra. This is me, Sagarika Chetri, signing off. And this is me, Gunjan Seni. We'll see you here on Monday evening. Till then, have a great weekend and keep watching Zoom. Style by Myntra.